So what is this FIR? It's first information report. Okay, this is called FIR, first information report. So Mr. Sindhe, he filed a first information report, and he is telling to the police officer that there is a theft in his house, and his maid Shanti has stolen the necklace of his wife. Okay, so now what happens that the sub inspector Rao, he records the this first information report which is given by Mr. Shinde. Mr. Shinde ने जो भी information दिया उसको वो लिख लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेते हैं. And now Mr. Sindhe comes back to his house with Sub Inspector Rao. Okay, and now what happens that the Sub Inspector is saying that I will now write the statement that Mr. and Mrs. Sindhe make about this theft. है ना, जो भी इन्होंने इस थेफ्ट के बारे में लिखा है, बताया है, उसको मैं लिखूँगा. And let me seal the envelope that has the money and take it with me as evidence. वो जो एनवेलप था जिसमें कि उसने 10,000 रुपीज़ मिले थे, उसको वो सील कर लेते हैं और उसको वो अपने साथ ले जाते हैं एज एविडेंस. ये एविडेंस है कि शांति जो कि एक मेड है, उसके पास 10,000 रुपीज़ कहाँ से आया. ये 10,000 रुपीज़ उसने उस गोल्ड चेन को सेल करके ही पाया है ना. तो ये एविडेंस हो गया थेफ्ट का. तो वो उसको अपने साथ ले जाते हैं. आई एम अरेस्टिंग शांति एंड टेकिंग हर टू द पुलिस स्टेशन. और वो शांति को अरेस्ट भी कर लेते हैं और उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं. अब शांति तो बहुत परेशान है. सी इज सेइंग दैट प्लीज़ डोंट लेट हिम टेक मी. वो मिस्टर एंड मिसेस सिंधे को कह रही है कि मुझे मत ले जाने दीजिए इनको. आई हैव नॉट स्टोलन द चेन, दिस इज़ माई हार्ड अर्न मनी. वो जो 10,000 10,000 रुपीज़ है वो बहुत मेहनत से मैंने कमाया है और मैं और मेरे भाई ने उस पैसे को बचाया है ना. तो वो कह रही है, लेकिन उसकी कोई भी बात सुनता नहीं है और उसको पुलिस ले जाती है ना. एंड देन सुशील जो कि शांति का ब्रदर है, he comes and he also comes to the police station and he asks Sub Inspector Rao to release Shanti because he's saying that Shanti is innocent. He has not stolen the necklace. The money which is there in the trunk is not that money which they get from selling the necklace, but it is the saving of their they have saved this money for the last 1 year. Okay, so now the sub inspector is saying that she has been arrested for the theft of a gold chain. है ना, उसने गोल्ड चेन थेफ्ट की थी, चोरी की है और उसके लिए उसको अरेस्ट किया गया. यू कैन गो टू द कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर. अब आपको अगर उसे छुड़ाना है तो आपको कोर्ट जाना होगा, कोर्ट से बेल लेना होगा, तभी हम उसको छोड़ेंगे. अदरवाइज हम उसे नहीं छोड़ेंगे बिकॉज उसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हो गया कि उसने ये क्राइम किया है. ठीक है. सो अब ये जो उसका भाई है सुशील, ही इज सेइंग दैट in order to get the bail they have to go to the court, and in court they need a lawyer. They are poor people, so he is saying that how will I get the money to hire a lawyer and who will stand as security for her. बेल के लिए कोई एक बंदा चाहिए जो कि गारंटी देगा. उसके लिए कौन देगा? एक गरीब, एक पुअर पीपल को कौन इस तरह की गारंटी देगा? पुअर पीपल के लिए कोई भी नहीं देगा, है ना. और जो भी हमारे पास पैसे थे वो भी आपने ले लिया. 10,000 रुपीज़ जो हमने सेव करके रखे थे वो पैसे भी आपने ले लिए. तो अब हम क्या करें, है ना. सो इस तरह से जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं सुशील का सब इंस्पेक्टर राव के साथ, तो क्या होता है कि राव फोर्सिबली कीप्स सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days, विच इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द लॉ.
that is why I told you, you must know the criminal justice system of our country, because if you are not knowing the criminal justice system, then you can be the victim of this arbitrary rules which are made by the authorities. You must know what is the rule of the land, and the rules must be followed. If the rules are not getting followed, then it is your duty to raise the voice, है ना. तो जानना बहुत ज़रूरी है, जानेंगे तभी आगे का काम होगा. दैट इज़ वाई दीज टॉपिक्स आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक, है ना. तो वो राव क्या करते हैं कि सुशील को पुलिस स्टेशन में बंद करके रख लेते हैं 2 दिन के लिए, लॉकअप, है ना. अब सुशील को अब्यूज़ किया जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है सब इंस्पेक्टर राव की तरफ से, और अदर पुलिस कांस्टेबल्स भी उसको मारते हैं. एंड वो क्या चाह रहे थे कि ऐसा ही होता है, इट हैपन्स. तुम लोगों ने, यू मस्ट हैव सीन इन मूवीज़, इन सीरियल्स, हम लोग ये सब चीज़ें देखते हैं जो हकीकत है. इन रियलिटी इट हैपन्स कि पुलिस मार के जिस पर इस तरह का एक्यूज़ लगाया गया उससे कन्फेस करा लेती है कि हाँ मैंने इसे ऐसा किया है. वो सिर्फ इसलिए कन्फेस कर लेते हैं ताकि वो उनको मार न लगे. जितनी बुरी तरह से ब्रूटली पुलिस उनको बीट करती है, इसलिए करती है ताकि बस वो इस डर से कि पुलिस अब मारना मुझे रोक दे, अब और आगे न मारे, वो कन्फेस कर लेते हैं कि हाँ ये क्राइम मैंने किया है. क्योंकि जैसे ही कन्फेस करेंगे उनको मारना बंद हो जाएगा. तो पुलिस यही चाह रहे थे कि किसी भी तरह से उसको कन्फेस करना मतलब एक्सेप्ट करना कि यस आई डिड द क्राइम, आई कमिटेड द क्राइम. ओके, सो पुलिस यही चाह रही थी कि किसी तरह से उसको कन्फेस कर लिया जाए कि उन दोनों ने मिल करके ये चोरी की है. और उनका एक गैंग है ना, दे हैड अ गैंग ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स जो कि जिन कई सारे घरों से ज्वेलरी चोरी करने का काम करती है ये गैंग, है ना. तो ये वो उससे कन्फेस कराना चाह रही थी. और क्योंकि सिंधे की ही लोकेलिटी में और भी चोरियां हुई थी और ज्वेलरी की थेफ्ट हुई थी उसी के नेबरहुड में, तो पुलिस को ये लग रहा था कि पुलिस को तो मैटर सॉल्व करना है. तो उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये सिंधे अगर शांति और उसके भाई सुशील इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हमारा गैंग है और यही चोरी करता है, तो फिर उनका जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना. बट सुशील जो है वो यही बोलता रहा कि ही इज़ एन इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर, है ना, और उसने कन्फेस नहीं किया. उसके बाद 2 दिन तक पुलिस ने उसको रखा और फिर पुलिस ने उसको रिलीज़ कर दिया. ओके, फिर नेक्स्ट क्या होता है, दीज आर द इंसिडेंट लाइक जब सुशील जो है वो शांति के सुशील जो कि शांति का ब्रदर है, जब वो उससे बात करने आता है तो उस समय क्या डेट है, वो डेट है 19 जुलाई की. ठीक है, चोरी हुई है कब, चोरी हुई है 18 जुलाई 2006. theft occurs. नाइनटीन जुलाई को क्या होता है कि अरेस्ट, उसी दिन अरेस्ट भी हो जाती है. ओके, और उसके नेक्स्ट डे जो है उसका भाई जो है वो पुलिस स्टेशन जाता है, अरेस्ट ऑफ शांति. एंड देन 19 जुलाई को सुशील was kept in lockup for 2 days. और इतना सबके बाद जब वो उसको फिर छोड़ दिया जाता है, और फिर क्या होता है कि 23 अगस्त 2006 को क्या होता है कि कोर्ट जो है वो शांति को बेल दे देता है. ठीक है, 23 अगस्त 2006 bail granted to शांति. ठीक है, कोर्ट ने शांति को बेल दे दिया
बट यहाँ पर कोई भी उसकी सिक्योरिटी के लिए खड़ा नहीं होता है क्योंकि वो पुअर है, और कोई सिक्योरिटी के लिए खड़ा नहीं होता है। 20,000 के बॉन्ड पे साइन करवाया जाता है, करवाने का ये होता है, कोर्ट देती है ऑर्डर, तभी बेल मिलेगा। बट कोई भी उसके लिए तैयार नहीं होता, और इसमें ये होता है कि उसको बेल मिलने के बाद भी शांति जो है वो जेल से बाहर नहीं निकल पाती, वो जेल में ही रहती है। सी इज़ वेरी ट्रॉमेटाइज्ड, सी इज़ वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल। अब ट्रायल शुरू होगा कोर्ट में, है ना, तो अब वो बहुत ही बुरी तरह से परेशान है, और वो सोच रही है कि व्हाट विल हैपन टू मी, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग येट आई एम बिहाइंड द बार्स जस्ट बिकॉज मैडम सस्पेक्ट्स मी, है ना, बिकॉज दे आर रिच। तो उनकी बात पुलिस ने सुन ली, ये पुअर है, इस पर इसलिए सस्पिशन किया जा रहा है क्योंकि इनके पास 10,000 रुपीज़ कहाँ से आया, ठीक है, गलत तरीके से उसके भाई को लॉकअप में रखा गया, इसको बेल मिल जाता है, स्टिल शी इज़ नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ द जेल। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, है ना, यही इसी तरह की चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं रियल लाइफ में। एंड अब वो आगे का जो ट्रायल होगा उसके लिए वो काफ़ी परेशान है। हम लोग ये चीज़ें जो हैं वो अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। Today we will start a new chapter in civics, and the name of the chapter is Understanding Our Criminal Justice System. So it's a very important chapter, and it is really helpful for you, beneficial for you to understand the criminal justice system, because many times we are not knowing about our criminal justice system, and that unawareness of us can lead towards injustice, because we are not knowing the rule, we are not knowing the system, so we may become victim of anything which is going on wrong, which is not according to our criminal justice system. So it is very much important for us to know the criminal justice system. First of all, what we find that what is a misconception among people, the laymen who are not knowing anything about the criminal justice system. So in that situation, many people are of the opinion that it is the police who decide whether a person is guilty or not, because you see in movies, in stories, wherever you can see that what happens that if any crime happens, है ना, police officers are there who file reports and they arrest persons also. It is the police who arrest the person. So many times the people think that it is the police who decide whether a person is guilty or not. Okay, but this is not true. First of all, you must know that what is the role of the police, what is the role of the court. If if a person is arrested, after his arrest, his or her arrest, the person goes to a court of law, and that court of law decides whether the person who is accused of some crime is a guilty or not, so it is the court which decides, not the police. Okay, what is the role of the police, what is the role of the court? We will discuss all these things in this chapter. What do we mean by fair trial, what do we mean by FIR, what is the meaning of public prosecutor? Everything we are going to understand through this chapter, and in order to understand it in a better way, we have a story that you can see. Your chapter starts with a story in which you find that what happens, this crime of theft is occurred. So we will start with the story, and through this story we will try to understand the criminal justice system of our country. So what we find that at their apartment in Mumbai, Mrs. Sinde is getting dressed. Mrs. Sinde, she lives in a flat, in apartment, and now she is getting dressed. वो तैयार हो रही हैं,
she has been frantically searching for her gold chain for over an hour. She was getting dressed, and now she was in search of her gold chain, which she is not getting. So more than an hour, for over an hour, she is searching for her gold chain, but she is not getting that chain. So now she is very much upset, and she is thinking that I'm sure it was in the it was one of the drawers जिसमें उन्होंने रखा था. She remember very well that she has kept the gold chain in that drawer also, but now the chain is not there. So she is very much upset, and she is thinking that where could it be. And now Mr. Sindhe, Mr. and Mrs. Sindhe, and they are the couple. So now Mr. Sindhe comes, and he asks his wife to do fast, to get dressed fast, because we are going to be late for the wedding. हम लोग अब late हो जाएंगे wedding के लिए, जल्दी करो, है ना. So now what Mrs. Sindhe is replying that I can't find my gold chain, है ना. It's not in the drawer. I suspect that Santi might have stolen it. She always spent a long time dusting my room. So now Mrs. Sindhe is saying that she has kept her gold chain in the drawer, but it is not there. So it is her suspicion that their maid Shanti, and Shanti, who is her maid, their maid, she must have stolen the chain, because she is of the opinion, Mrs. Sindhi is of the opinion that Shanti spends a long time in the room when she do the dustings and all in the room. So during that time she must have stolen my gold chain. Okay, so now what happens that Santi जो है she is working in the house of Mr. and Mrs. Sindhe for the past 3 years. Okay, and now she calls Shanti. Mrs. Sindhe जो है वो शांति को बुलाती है और कहती है, शांति, have you begun to steal now? अब तुम चोरी करना शुरू कर दी हो, है ना. And that too my gold chain. तुमने मेरे गोल्ड चेन को ही चुरा लिया. Bring your trunk. I want to search it. We have called the police. So if you have the chain, return it now. So now she is Mrs. Sindhe is saying that they have called the police also, है ना. उसको कह रही है कि हमने पुलिस को बुला दिया है, अगर तुमने मेरी चेन ली है तो मुझे वापस कर दो और अपनी ट्रंक लेकर आओ. ट्रंक क्या होता है? जो बड़ा सा बॉक्स होता है, स्टील एल्यूमिनियम के बॉक्स जो होते हैं, that is called trunk. So she is saying that ki bring that trunk, है ना, and I want to search it. तुमने अगर चुराया है तो तुम वापस दे दो, अपनी ट्रंक लाओ, मैं उसको सर्च करूंगी, मैंने पुलिस को बुला दिया. ये सारी बातें वो शांति को बोलती हैं. ठीक है. अब वो ट्रंक अपनी ले आती है और मिस्टर शिंदे जो है he searches her trunk and finds an envelope with ₹10,000 in it. ठीक है. There was an envelope in the trunk, and in that envelope 10,000 rupees were kept. So now he screams at Santi, saying that this is the money she has got from selling the chain. So what they are suspecting, Mr. and Mrs. Sindhe, that Santi has stolen the gold chain and then she has sold the gold chain, and by selling that gold chain she got that 10,000 rupees which is kept in the trunk in the envelope. Okay, so it is their suspicion, they are very much sure कि ऐसा ही हुआ होगा. Now Santi is saying that my brother and I have been saving this money over the last 1 year. You know, they are saving this money for the last 1 year, and we want, why they are saving this money? Because they want to buy a bull when we go to our village, you know, and only for purchasing that bull we are saving this money from our salary, whatever salary they are getting, they are saving the money from that salary only. She and her brother, both of them are saving it for over a year, और तब जाकर के उन्होंने 10,000 रुपये जमा किए. So now
मिस्टर शिंदे हैज़ कम टू द पुलिस स्टेशन. उनको पता समझ में आया कि ये शांति नहीं चोरी की है. She has stolen, she has sold the gold chain, and that 10,000 rupees which is found, which was found in the trunk is actually belongs to them. क्योंकि उसको चैन को ही उसने चोरी करके बेच करके वो 10,000 पाया है. तो now he goes to the police station, and now he files a FIR. What is this FIR? It's a first information report.